सादंत सहज बळभद्रेण बळिना सुभद्रानाथस्थ सकळ सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सविवेणु शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं निदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावर सजल जलदाक्षेणी रुचिरो सुरेन्द्रीनाथ स्तुतिगणशिखं गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मा पीडा कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी लीलाद्रो निहितचरणो नन्दशिरसि रसानन्दो सरसवपुरालिङ्गनशुको जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेव पतले स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्णशदय दया सिन्धुर्बन्धुर् सकल जगता सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरतु संसारं द्रुततरमसारं शूरपते हरध्वं पापनां विदतिवपरां जगवपते अहो दीनेनाथे निहितचरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नवीच चेराज्यं न च कनकमाणिज्यविभवं न चाजेहं रम्या निखिलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ॐ जगन्नाथाष्टकं सम्पूर्णम् Happy anniversary, happy anniversary, our Saint Joseph Public School. Happy anniversary, our Saint Joseph Public School. Happy anniversary. Little star, we are all fit and fun. Little star, little star, little star, we are all fit and fun.
साई प्रसाद मिश्र कोड होचा क्विक स्टेज पे हुआ है साई प्रसाद मिश्र ओम अथ श्री जगन्नाथाष्टकम् कदाचित् कालिन्दी तटविपिन सङ्गीतकरवो मुदाभिनारी वदनकमलास्वादमरूपा प्रभासम्भूर्ब्रह्मा शूरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे भुजे सविवेणु शिरसि सिखिपीच्छं कटितटे पूरं मे द्रान्ते सहचर कटाक्षं निदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति परिचयो ना ना सेठी हमें नथिलु काना हमें जो क्रैप सिस्टम करिथिलु त सेटा ग्रुप रो मिली जो and parents and a media brother, cameraman and a tent house worker and photographer. On the auspicious celebration of such group of institutions, I would like to introduce the dignitary, those who are on the dais. It is the first and foremost duty of each and every institution to introduce the portfolio, prestige, position, configuration of the guest, those who are on the dais. I would like to say, CRCC, Mr. Ekadashi Sethi of Balitandrapur, today he is the guest of honor. He has been invited to our annual day celebration. He an orator, eloquent speaker, and he has depth knowledge regarding literature. I have also come across with him recently in the annual day celebration of Balitandrapur Government Girls High School. Then, today, most fascination, most attractive, most enjoyable, most spectacular attraction of the annual day celebration, Mr. Suresh Kumar Pari, who was the former assistant teacher of this organization of this institution. Today he is the chief guest of the annual day celebration. I would like to say he was a good teacher. Now he is working in Mahanga Polisai Women's College as a political science lecturer. He has depth knowledge in SST. He was very popular among the students of our school. Not only school but also plus 2 students also liked him very much when he was in our organization. Though he has left this organization, but he is always with us. He is always accompanied with us. He is not only a good teacher but also a good administrator. He was the head teacher of the campus too. He was performing his duty perfectly. I would like to say so many things regarding him, but I will take little time to finish the introduction. I have been instructed. Though weather is not favored at all, so that then I came to the president as well as principal of the annual day celebration, my beloved teacher, Mr. Purachandra Sahu. He is well known to everybody. He was the former principal of this organization. I am holding a portfolio, principal campus too. But
he is my teacher, he is my beloved teacher. I am always paying him due respect and honor, and I am always bending down my head before his feet. He has depth knowledge. He is a good administrator. He is not only a good administrator but also a good disciplinarian. He is also very popular among the students. He is not only popular among the students but also popular among the parents or guardians or locality. At a glance, he is a lyricist, journalist, story writer, as well as social worker. What the students perform before you are the composer of that welcome song, so that our anchor, Mr. Ajay Kumar Sama, introduced him before you understand. Then I would like to say, who is the owner, founder, chairman of this organization, Mr. Abhimanyu Malik. First of all, I would like to pay him due respect and honor. He is our honorable chairman and founder of this organization. Due to his perseverance and endeavor, this organization has reached in this stage. He always shares with the will and woe of the student, not only student but also each and every staff. Now it has reached at the birth of 17 years. Last year we performed 16th annual day celebration. This year we are celebrating 17th annual day celebration. All of you know, all the parents want to celebrate their children's birthday every year in a particular date, in a particular time, in a particular moment. Likewise, each organization or institution also perform, celebrates, commemorates, observe such a function. So that we are celebrating 17th annual day this year with pomp and show, distantly, interest and enthusiasm, etc. Then, Mrs. our respected secretary of this organization, Mrs. Premalata Malik, she is no less than a mother. She is the mother of all the children and a staff member. Though I always say Ma and Chia, because she is the eldest daughter of mine. She is my eldest daughter. Once upon a time, I was her teacher. She is very affectionate. She is very loving. She is very caring. She is very tender. She is very pity. She is very sympathetic towards all the এই বিদ্যালয়କୁ ত্যাগ সময় নিষ্ঠা দেই যে এপর্যন্ত আজি এই বার্ষিক উৎসব ৭তম বার্ষিক উৎসব পালন କରୁଛନ୍ତି। যদি চিন্তাধারা ভালো হুয়ে କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚରିତ୍ର ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଚରିତ୍ର ବଦଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଠିକାର এই ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିବାକୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ବାସ୍ତବରେ এই ଯୋଉ ପିତାମାତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଦେଇ ସମୟ ଦେଇ ଆଜି ଏଠାରେ এই ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତଥା ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର 5ଟି ଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଡିଭୋସନ, ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁଟି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦରକାର। ତୃତୀୟ ହେଉଛି
डेडिकेशन त्याग दरकार चतुर्थ होउची डिसिप्लिन शृंखला दरकार एवं पंचम होउची प्रतिज्ञा वा संकल्प एई पांचटी हेले निश्चित भाबरे पिला माने तांकर भाग्य निर्धारण करिवे एई पांचटी सेई गुरुजी गुरुमा माने प्रयोग करी एवं क्लासरूम रे ट्रांजैक्शन करी धैर्यर सहित पिलामानकर भाग्य निरूपण करुछन्ति एई वार्षिक उत्सव पालन करिवार मुख्य उद्देश्य होउछि पिलामाने कोकरिकुलर एक्टिविटी रे अंशग्रहण करि कृतित्व स्थान अधिकार करिछन्ति सेमानको श्रद्धा एवं सहानुभूति दवा एवं आगो को किपरि सेमाने भलो करिवे एवं जो पिलामाने विफल होइछन्ति दुख करिवार नाही आज जा विफल होइछि काली निश्चित भाबरे सफल हेबे वास्तव में जेतबळे पिलाटिए जन्म हेला मां जेतबळे तार प्रथम सही क्रंदन नुहे तार सही संगीत शुणिथिला तार सही 10 मास 10 दिन रा दुख को भूली जाइतिला दुर्भाग्यर कथा अत्याधुनिक जुगरे आज मां को एडे देई चारि खांत मध्यरे पदाघात करी छाड़ी चली जाउछि शेष मुहूर्त रे अनुरोध रखिबी कोनी पिला मानकु पिता माता को ताकू वास्तव रे से वैल्यू एजुकेशन आवश्यकता अछि आज देखंतु भारत वर्ष को देखंतु शिक्षार अभाव नाही ज्ञानर अभाव नाही दार्शनिक अभाव नाही वैज्ञानिक अभाव नाही सब साई मध्य शेष मुहूर्त रे पिला माने बापा मां को छाड़ी चली जाउछि तांकर शेष साथी होउछि जराश्रम जो मां दिने सब सदा बेले प्रस्तुत तार जीवन दबा पिला किंतु आज अवस्था आपण माने अनुभव करि पारुथिबे तेणु करी पिला मानको मो अनुरोध रखिबी जे शेष मुहूर्त रे आज प्रतिज्ञा करंतु वृद्धावस्था रे केबे भी तांकर पिता माता को छाड़ी दिबे नाही कारण हम संस्कृति दिने सिखैतला मातृ देव भव पितृ देव भव अतिथि देव भव आचार्य देव भव मां ही हमर प्रथम देवता जे कि जहार मोह प्रथमे पिलाटिए देखिथिला किंतु परवर्ती मुहूर्त रे से तार जो निष्ठा साधना कर्तव्य त्याग एवं जीवन देवा ପାଇଁ जो प्रस्तुत कला ताकू शेष मुहूर्त रे पिता माता को भूली जाउची दुर्भाग्यर कथा हे आर्य संतान तुमे यदि परिवर्तन न हो ताले दिने ना दिने तुमे यार कुकर्म भोग करिबा को पड़िबो तुमे जेते ज्ञानी हो पंडित हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो दिने दिने तुमे कोन करिबो ना से शिक्षक से गुरु एवं भगवान का डिवाइन पावर को पाखरे नतमस्तक होबो जने जेते बड़ अधिकारी हेले मध्य तीन स्थान रे तार पाद नै जाय तेनु कर से आउरी मध्य मने रखिबा को पड़िबो आमे हमर ए जन्मभूमि शिक्षानुष्ठान पिता माता एवं जहा ठारे किछि शिखिचंती ताकू केबे हेले जीवन रे भूलिबा नाही आउ से जो पिता माता हमको जीवन रे त्याग दे बढ़िले से पिता माता पई से कोटि गीत कोटि दंडवतर गोटे छोटिया कविता टे आपण मान हेले बापा बहु मिले नाही टंका पैसा रे सब बेले हेले बापा बहु मिले नाही पिला दिने मते बहु देखाई छि केते बणी पारा काऊ पिला दिने मते बहु देखाई छि केते बणी पारा काऊ दोष देखी बापा हाथ उठेले बहु कहे थाऊ संज होई गेले बहु देखाई छि केते जन्ना हो तारा घोड़ा ही बापा पिठी रे बसाई बुली चंती घर सारा खेलनाटू जोता जामा बाई कथा मो पाई खेलनाटू जोता जामा बाई कथा मो पाई तांकर दंड ममुहरे टिके हस देखिबा को तांको मन छत छत पिला दिन कथा जमा मो भूली पारिबेनी कदा पिला दिन कथा जमा मो भूली पारिबेनी कदा पिता माता मोर बड़ देवता जे मने रखिथिबी सदा सेही ठाकुरंक सेवा मु करिबी जीवनर मोर व्रत सेही ठाकुरंक सेवा मु करिबी जीवनर मोर व्रत से पिता माता पाद तले मोर कोटि दंडवत रियली मदर इज ब्यूटीफुल फादर इज पावरफुल टीचर इज वंडरफुल really we are here to make the program successful so mother is the first teacher of a child and teacher is the second mother of a child school is the second home of a child home is the first school of the child we cannot forget this moment once again thanking and respect to all the participants teachers students and respected persons before me thanks jai jagannath respected founder of this institution, officer, respected
Secretary Lily Ma'am, respected principal of both campus, Pratap sir and Punna sir, honorable guests on the dais, all the distinguished teacher, my lovely campus for me it is not only an institution, it is a place where the most important part of my academic journey, my professional journey began. That is the beautiful quotation says, the journey of success always begins with the place that first believed in you. এটি 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଏବଂ ଅକଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମୋର ସହକର୍ମୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। କମ୍ ସମୟ ଅଛି ତ ବହୁତ ବ୍ରିଫରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। I joined this institution in May 2022 as a simple social science teacher. But from the very beginning, this institution gave me something very special, opportunity, value, and something very special. Like over time, I was given the opportunity to take on several important responsibilities, such as monitoring duties, sports coordination, exam in charge, and later on, the head teacher of campus too. Each responsibility not only strengthened my professional skills, but also shaped me into a more responsible and confident leader in the field of education. There is a beautiful saying, responsibility is not a burden, but it is a opportunity to grow. Responsibility is not a burden, it is an opportunity to grow. In 2024, I was honored with the Best Teacher of the Year award, which remains one of the most memorable memories in my teaching career. That recognition motivated me to do even more better and give my best for the betterment of the students and betterment of this institution. As we all know, recognition is the fuel that inspires every teacher to do even better. At this moment, I would like to express my deep gratitude to our respected founder of this institution, Avi sir. Sir, your vision, your dedication, your passion towards this institution makes such an institution, makes such an environment that where students can dream big and teachers can grow professionally. Personally, I am extremely thankful to sir for believing me in every situation and trusting my abilities. Your confidence on me gave me the courage to take responsibilities and perform more better. As a famous quote says, a true leader is one who creates more leaders. A true leader is one who creates more leaders. My heartfelt thanks also goes to our respected principal of both campus, Pratap sir and Punna sir. Sir, your guidance, your discipline, your leadership have always inspired each and every teacher of both campus for give their best for the betterment of this institution. Because it is rightly said, a good institution is built not only by the building, it is only built by the good teachers and visionary leaders. Dear students, your present situation doesn't define your future. What defines your future? Your determination, your hard work, and your belief in yourself. Always remember the powerful line, dream is not what you see in sleep, dream is something that doesn't let you sleep. बहुत कम समय मते दिया जाय ब्रीफली सारिया पाई गोटे हृदय गोटे कथा थिला लास्ट टाइम कहि कि मु विदाय नेबी. I would like to say something from my heart today, even though I am currently working as junior lecturer at Mahanga Women's College, Polisai, Cuttack, but this institution will always remain special for me. गोटे छोट एग्जांपल देबी जतले 2022 मे मासरे कैंपस को आसीथिली गोटे बाणीपियारू पीजी पास आउट होइता गोटे स्टूडेंट है कि आसीथिली किंतु गला बेल के इंस्टीट्यूशन ए कैंपस मते बहुत किछि देइछि. तो ए कैंपस पाखरे सबले मु ग्रेटफुल रहिबी, सबले नतमस्तक रहबी कैंपस पाखरे. जदि हाथ गणति केतेटा अचीवमेंट कथा मु काउंट करिबी 2022 रे मु गोटे पीजी स्टूडेंट है कि आसीथिली किंतु एठी बीएड कंप्लीट करिछि. ओडिसा रे जेते सारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अछि, ओटीटी हो, सीटीटी हो, ओएसटीटी हो, यूजीसी नेट हो, खाली यात्रा आसीथिबा पिला गला बेल को ए इंस्टीट्यूशन कितिटा गवर्नमेंट जॉब तक देछि. तो ये इंस्टीट्यूशन पाखरे सबुबळे मु नतमस्तक रहिबी. If the management ever thinks that I can contribute to the student here, I would be truly honored if I get an opportunity
to teach or interact with students in my free time. I would give my great happiness to start this institution again in possible way. I wish this institution continued success, and I hope many more students from here will achieve great success and also make the institution proud. Let me end with the one final thought. Great institutions create great students, and great students create great nations. Thank you. Thank you very much. The think positively, work positively, the result will come automatically. जहाँ आपणकर अभिशार क्षेत्र में घटी जेते वर्षा जेते झड़ आसुची अभिशार वर्षा हम फंक्शन हम आस अभिशार मन द्विधा ना वर्षा फंक्शन हो जाऊँगी तथापि से खुशी पॉजिटिवनेस अभिशार पॉजिटिवनेस एवं कैंपस 1-2 रे थिबा प्रताप सार एवं पूर्ण सार दक्षतापूर्ण मैनेजमेंट दिल्ली मैडम मैनेजमेंट आज ये अनुष्ठान केते बड़ कर नहीं तेणु सो आई रिपीट अगेन पिला माने थिंक पॉजिटिवली वर्क पॉजिटिवली रिजल्ट विल कम ऑटोमेटिकली आ गोटे कथा कहबी गोटे छोटिया गप कहबी पिला माने उद्देश्य गोटे गप कहबी पिला माने माइंड सेट है कथा रे गोटे गपटे कहूची जे गोटे गाँ रे गोटे समग्र ब्राह्मण पड़ा था दिने जड़े ब्राह्मण स्त्री लोक जो ब्राह्मणी कहती दिने गोटे दुर्भाग्यवशत से चुली रे चुली लिपा पोता हुए चुली रे पान छपटे पकई देले तापर सकाळ देखला जो पान छप पकई देले से जगहटा पूरा सुना सुना चके बाहरला और से देखले आश्चर्य ये कोन सुना बाहर तापर पुणी पान छप पकई राति रे तापर सुना से राति रे पुणी पान छप तापर सकाळ सुना तो एमिति से ते सुना पाइले ताको घर द्वार सब परिवर्तन घटी गला पाख पड़ोसी पचारा नानी तुम परिवर्तन केमी बाट बते देले समस्ते धीरे 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 गाँ सारा पकड़े छेप है सुना समस्त चलनी बदली गला कोठा बाड़ी सब हो गला जड़े गरीब गरीब ब्राह्मण स्त्री पचारा तो स्वामी की कहला यही पद्धति मु भी पाई आम टे छेप पकेवा कि ब्राह्मण मना कला आम बरम गरीब रहा ये अन्याय कम आम करवा ना इमिति दिन आसला जे ब्राह्मण स्त्री अति असहिष्णु है सबू कोठा बाड़ी घर गले आमर किसी ना तेणु जदि तुम्हें पान छप पकड़ मतलब अनुमति न दियो ताले आम गाँ छाड़ी पड़ेगा ये समग्र दौलत समग्र संपत्ति धारी व्यक्ति पाखे आम गरीब बनिया देखा ना आम गाँ छाड़ी चली जावा एवं से गाँ छाड़ी किसी बाट गला हु गाँ जलिला पछक बोली चाहिए ब्राह्मण कला बुझीपारू कौन समस्त अन्याय करते जड़े लोक आम थे साधुता विषय तेणु संपूर्ण अन्याय कले साधुता ठीक थाए से कथा रहा माने तेणु तुम्हें ये जो सुना तैयारी करने पद्धति शिखब ना बरम गरीब रही साधुता कह समग्र स्वर्ण पुरी की बंचेब से निष्पत्ति पिला मानकर से निष्पत्ति गार्डियन मानकर तेणु ये कही मोर वक्तव्य सांग कर धन्यवाद। Hello, attention please. Dignitary guests sitting on the dais, parents, guardians, teachers, non-teachers, media brothers, and last but not least, loving children. I welcome you all to this wonderful gathering. I will not take much time because you have heard so much from our luminary king. You have heard so many advices. Listening to advice is not enough. Implementation. You have been listening to advice from your teachers, from your parents, from our guardians. But how much you are executing them? How much you are implementing them? We teachers are not only confined teaching from the pages of the book.
going out of the scope of the book, we give you so many advices in the classroom. But listening to advices is not enough. There is a English saying, an ounce of action is better than a pound of words. An ounce of action is better than a pound of words. But how much of cause I pare? The action speaks louder than words. ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋର ଗୋଟେ ଗପ ମନେ ପଡୁଛି, ବେଶୀ ତ କହିବିନି ବୋଲି କହିଛି, କାରଣ ବେଶୀ କହିଲେ too much of anything is bad। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ବହୁତ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଭୋମିଟିଂ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏଠି ଆମର ଯେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ 5D ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଡ୍ୟୁଟି, डिवोशन, डिटर्मिनेशन इत्यादि इत्यादि आधुनिक दूसरे कार्यकारी करूँ ना ओनली इम्प्लीमेंट वन कल्पना I will conclude my speech with one small story. Once there was a big meeting. कल्पना कल्पना कौन? Eminent कल्पना विश्वाल speakers were invited to give speech in the meeting. There was one person who was sitting to the right moment to listen to the advice. गोटे लोक भितर शेष पर्यंत बसी रही है से एडवाइस शुणा मीटिंग रे। When he was coming back, he was talking to his friend that these speakers, they spoke so well, इतने भल कहे ताको जने पचारे प्रश्न पचारे बाबू तुम बसदेल कौन भल कहले भारी भल कहवा कथा जे से एत भल कहीजे जे मुझे किसी अर्थ से किसी मन रखी ना जहाँ कहे मीटिंग किसी मन रखी ना मुझे कहूँ आपण मान इम्प्लीमेंट वन थिंग इन एक्शन गोटे जिन को कार्य परिणत करूँ ना आपंकर जीवन गति बदल जाए। मुझे यही आशा करी बहुत उपदेश शुणुंट उपदेश शुणिक चली लाभ ना कार्य परिणत करने चेष्टा करूँ आपंकर जीवन गति बदल जीव मुझे आई विल कंक्लूड माय स्पीच। शिक्षाकुंड अभिभावक मंडली एवं मोर प्रिय छात्र छात्री माने आज आम शिक्षानुष्ठान यही शुभवार्षिक उत्सव अवसर में मुझे समस्त को स्वागत करुँच। यह केवल एक उत्सव नुहे बरं गोटे वर्षर आम परिश्रम सफलता शिक्षार एक प्रतिफलन। सांबादिक भाव मुझे गर्वर सह कहूँ कि चलित वर्ष आम छात्र छात्री मैंने शिक्षा सहित क्रीड़ा और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते आम विद्यालय भित्तिभूमि विकास कर गुणात्मक शिक्षा देवाई आम सर्वदा चेष्टा करुँ। आज उत्सव को मंडित कर मुख्य अतिथि सम्मानित अतिथि मान बहुमूल्य अशेष अशेष धन्यवाद। शिक्षक मान निष्ठा और त्याग विश्वास आम प्रेरणार उत्स आज सहयोग विश्वास अभिभावक प्रेरणा उत्स A very good evening to everyone. Honorable today's President, dedicated Principal of this institution, Mr. Purnachandra Sahu, Second Campus Principal, Mr. Pratap Chandra Rautrai, respected Suresh Sir, respected Ekadu Sir CRC of Balchanpur, respected Secretary Ma'am, respected all the staff members of this institution, respected reporters, respected police, and respected all the parents, guardians, and audience. Today in the
annual day celebration, I would like to say something about this occasion. सर्वप्रथमे उपस्थित समस्त अभिभावक पितामाता दर्शक मानकु मोर हार्दिक अभिनंदन सहित हृदय सम्मान एवं प्रणाम जनाऊँ। आज ये जो उत्सवटी आम पालन करूँ आपण मानकर उत्कंठा को मु मापी पारु नहीं। आमे आज ये जगार उपस्थित होइछु केवल आपण मानकर श्रद्धा सहानुभूति और भल पाइबा पाई। ये अनुष्ठान 2010 मसीह आम आरंभ करूँ मात्र 2टी क्लास रु नर्सरी और एलकेजी क्लास रु मात्र आज आम द्वादश श्रेणी में पहुंचीचु। नर्सरी रु 10th पर्यंत सीबीएस क्लास परिचालित होता सत्वे सीएचएससी युक्त 2 विज्ञान आरंभ करिछु। दीर्घ 3 वर्ष हो गलानी। विगत दिन में पिला मानकर परीक्षा फलाफल विषय आपण माने संपूर्ण माने अवगत अछंती। आपण मानकु आनुअल रिपोर्ट माध्यम रे विद्यालय सविशेष तथ्य जणै दियाजिवो। मात्र आज आम ए जगह पहुंचीचु ये मु गर्वर सहित आज कहूँ ये केवल आपण मानकर भल पाइबा श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास आत्मविश्वास पाई आपण ए अंचल में बहुत अनुष्ठान थाई मध्य आपण से स्कूल को भल पाइबा देथिबारु आज आमे माने समस्त एठारे एकत्रित होइचंती। ये सौभाग्यर श्रेय केवल अभिभावक मानक पाई। ता छड़ा अनुष्ठान की प्रतिष्ठा करदे कि अनुष्ठान प्रतिष्ठा तार गर्व ता नुहे। ये अंचल समस्त बुद्धिजीवी शिक्षित एवं अभिभावक माने शिक्षक शिक्षयित्री केयरटेकर आरंभ करके ड्राइवर भाई माने समस्त कर्मचारी मानकर सहयोग आज ये जगह आम पदार्पण करूँ। समय अतिक्रम हो अधिक कहबे नहीं बोली निष्पत्ति नहीं। खाली भविष्य कथा को टिके कहूँ आपणकर आगामी भविष्य को आम जो प्लानिंग करूँ आपणकर विद्यालय शिक्षादान तो आप जानते गत वर्ष ठारू 3टी शिफ्ट आम परिचालित करूँ। नर्सरी टू 1 गोटे शिफ्टिंग करा 2 ରୁ 7 गोटे बैच एवं 8 ରୁ 12 गोटे बैच 3टा शिफ्ट रे आम विभक्त करूँ। मात्र आपण मानक मध्य धारणा अच्छी कि नहीं केते जन अभिभावक मान मत आम गोटे वर्गीकरण हिसाब से अनुष्ठान को परिचालित करूँ। नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1 2 सेक्शन रोची से जड़े प्रधान शिक्षक आम नियुक्ति देचु एवं 2 ରୁ 7 मध्य जो क्लास परिचालित होची सेथिरे मध्य जड़े प्रधान शिक्षक को नियुक्ति देचु जे कि 2 ରୁ 7 रे अध्ययन करथुवा पिता माने जानिथि पिता माता माने जानिथिबे आशीष सर होचंती ए स्कूल रा 2 ରୁ 7 विषय प्रधान शिक्षक एवं ये कैंपस को होल परिचालन करिया पई आपण मानकर असुविधा पिला मानकर समस्या को बुझिबा पई सुचारू रूपे तुलेबा पई जने दक्ष एवं फाउंडर प्रिंसिपल आम पाखरे अछंती जे कि पूर्ण सर महोदय प्रतिदिन अमरारी भाव में से आम पाखरे आसी पिला मानकर कथा अभिभावक समस्या मध्य बुझती आकु छाड़ले आम आउ जो सेकेंड कैंपस द्वितीय कैंपस टी करिछु सेठी 8 ରୁ 12 पर्यंत क्लास कंटिन्यू होची। आपण अंचल एवं जड़े प्रतिष्ठित विज्ञ व्यक्ति प्रिंसिपल दायित्व भार ग्रहण करछंती प्रताप सर महोदय अछंती मंचरे आज ताकू छाड़िले आम 8 ରୁ 10 पर्यंत जड़े हेड टीचर्स को आम नियुक्ति देचु जे कि वर्तमान स्टेज आपणकर प्रोग्राम रे सहयोग करछंती अजय सर ताको परे मैनेजमेंट आम जो वर्गीकरण हिसाब से करैछु मु दृढ़तार सहित कहबी जेते पिला आम पाखक आसिले भी कौन प्रकार समस्या हम नहीं जेते समस्या आपणकर अच्छी पिला मानकर अच्छी पाठ पढ़ा तो अन्य समस्या सुचारू रूप आम मेंटेन करि पारछु। मु दृढ़तार सहित कहूँ आपण मानकर आशा भरोसा एवं भल पाइबा अटूट रहू
এবং এই ভাল পাইবা রইলে আমি এই অঞ্চলের গোটে সুন্দর অনুষ্ঠানটি তৈরি করিপারিবা। আজি 800-900 ছুয়া পাঠ পড়ুଛନ୍ତି, কালি দরকার পড়লে 2000 পিলা পাঠ পড়িবারে ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବିନିମୟରେ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଆମେ ଘର ପାଖରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ଆମେ ଏଥର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରୁଥିଲି। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ 6 onwards 12 ହଷ୍ଟେଲ ଫାସିଲିଟି କରେଇଛୁ। ହଷ୍ଟେଲ ଆକୋମୋଡେସନ ପିଲାମାନେ ରହିପାରିବେ, 24 ଆୱାର ରହିବେ ଏବଂ 100% ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ସ୍କୁଲ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିପାରିବେ। ପାଠ ପଢାର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନର ବାଟ ପାଇପାରିବେ। ଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଡର ଭୟ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦୂର ହେଇଯିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟାଇମ ବାହାର କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେୟାର ନେବା ପାଇଁ, ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡେ ୱରି ଗୋଟେ ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଇଛି। ସରି ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନେ ରହିପାରିବେ। ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ରୁଟିନ କାଲି ପିରିୟଡିକାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ इवनिंग रे आमे क्लास दबु। राति संध्या 6 रु 8:30 9टा पर्यंत आमे क्लास टेकअप करेबु एवं 10टा रु 11टा पर्यंत जो टीचर्स रही हॉस्टल तांकर पर्सनल केयर नै परिबे। मॉर्निंग रे मध्ये आमे 7:30 रु 9:30 पर्यंत क्लास टेकअप करी बोली स्थिर करछु। तेणु पिला मानकर पाठ पढ़ा पई खाली जे मैनेजमेंट किंबा सेक्रेटरी की शिक्षक माने बेकर होइले हेबनी। आपनकर गोटे पिलाटी भलो मनीष हेबाकू हेले चाहिले ताले हम 3 जनकर आवश्यकता अछि, सहभागिता अछि। जने शिक्षक आउ आपनकर अभिभावक एवं छात्रटी। वर्तमान जो प्रकार सिचुएशन अछि समाज रे, तेणु आमे पिला मानक प्रति भल पाइबा जति दौरान ताकू आयत करवा उचित होचे एवं तार गतिविधि आचार व्यवहार सांगसाथी समस्त को अनुकरण करने को निवेदन। तेणु गोटे सुंदर मनीषटी गठन करने एथिरे अभिभावक मानकर बहुत गुरुत्व भूमिका रही। तेणु से भूमिका जब आम लिभे पारिबा ताले आम निश्चय ए अंचल में घर पाखर आम पिला मानक आम आखि आगे रखी आम सुंदर मनीषटी गढ़ी पारिबा। मु अधिक किसी कहबी नहीं, पिला माने व्यस्त हेलेनी। तेणु मोर गोटे निवेदन आपण मानकू समस्त अभिभावक पुलिस भाई भाई अच्छा सांबादिक भाई मैंने टिके आज प्रोग्राम को संपूर्ण भाव में सहयोग करेंगे। तेणु आम डिनर व्यवस्था भी अच्छी। आम चेष्टा करूँ जेहेतु वर्षा पाग हठात केतबेले आसुची कहि हबो नहीं। काली दिन में बहुत माँ माने भाई माने बहुत व्यस्तता भितर थे, तीर्थिकी भी घर को जाइछंती। आज आम चाहबू चेष्टा करूँ संपूर्ण प्रोग्राम को सारिया जदि टिके विलंब हुए भी, तेणु आपण माने डिनर करी अपेक्षा करेंगे। पिला माने जो पिला माने आसीचंती गाड़ी रे गाड़ी लेके छाड़िबो। झियो छुआ माने जदि थाती मैनेजमेंट रिस्क स्टाफ पठे कि पिला को नहीं घरे छाड़िबे। विलंब हेले भी सेति पाई कि व्यस्त हेबे नहीं। मु एति कहि कि मोर वक्तव्य शेष करछि। आपण मानकर सहयोग कामना करी धन्यवाद।